Hello and welcome to the next part of Maths chapter Circles. Angle subtended by an arc of a circle. So this part is the third part of class 9th CBSE and it is the first part of class 10th ICSE. So it is very surprising to see that how the syllabus is chosen by different boards. CBSE has included the whole chapter in class 9th itself, and ICSE has divided this chapter in half of the chapter in class 9th and half in class 10th. So from here ICSE class 10 syllabus is beginning, and this is the first theorem for class 10th ICSE, and I don't know for 9th CBSE this is theorem number 8 as per our book. Okay, so whatever we were following. Anyway, so let's begin with this theorem. Angle subtended by an arc of a circle. So the theorem says that angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. So it is very important for all of you, and when I say all of you means all of you, okay, whether you're a CBSE student, ICSE student, class 9, class 10, doesn't matter. For all of you it is mandatory, it is necessary, it is compulsory that you memorize this theorem. The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. Now what does this theorem means? Let's check its meaning. Okay, so here we have an arc PQ of a circle with center O with a point R on in QP other than P or Q. Okay, let me just show you with my diagram which I have over here. So I have three figures over here. In the first figure, do you see arc PQ? I will highlight it. This is the arc PQ I am talking about in the first figure. It is essentially a minor arc. Minor arc. In the second figure, arc PQ is over here. You see this? It is essentially a major arc. I'm sorry, this is not a major arc. It is a semicircular arc. Semicircular arc. And if you see over here in the third figure, this is the arc PQ we are talking about. And here it is major arc. So it doesn't matter which type of arc is it. This theorem is applicable in all the three cases. That's why we have three figures. We don't have to write three proofs. We have just a single proof. But we will draw three figures to understand that this theorem is applicable in any of the three cases, whether it is a minor arc, semicircular arc, or a major arc. What is the theorem again? Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. Okay, so that is the theorem. Now, do you see point R? We have considered this minor arc PQ. R is on the other part of the circle, that is on the major arc. See, this is the semicircular arc over here, R is on the other side. This is the major arc PQ, R is on the other side in the minor arc portion of the circle. So R is a point which is selected in the other part of the circle, not on R selected arc. Okay, please understand that we have two arcs, PQ and QRP. PQ and QRP. PQ and QRP. Okay, now the theorem states that, the statement of the theorem, please understand, it states that angle subtended by an arc of a circle at the center. Now I want you to draw, I want to draw your attention to
what this theorem actually means. Angle subtended by an arc at the center. Now this arc is subtending or making. This word is very important. Subtending. S-U-B-T-E-N-D-I-N-G. Subtending. What do you mean by subtending? Subtending means making. Okay. Subtending means making. Which angle is made by this arc PQ at the center of the circle? Arc PQ is making angle POQ at the center. Angle POQ. Angle POQ, as you can see over here. Do you see that? Angle POQ is the angle which we are considering, which is the angle made by our arc at the center. This is the center, O. O is the center, O is the center. Okay, so angle made by our arc at the center is double the angle made by the same arc at any point on the remaining part of the circle. Now the same arc is making another angle at the remaining part of the circle. So in the remaining part of the circle we have selected point R, and which angle is made by arc PQ at the remaining part of the circle? Angle PRQ. Angle PRQ. Angle PRQ. So what we have to prove? We have to prove that angle subtended by an arc at the center POQ is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle PRQ. POQ is double PRQ. POQ is double PRQ. That is what we have to prove. So how do we prove this? So as I told you, any of the figure is you can say valid for getting our proof done. Okay, so let's see how to prove this. Let's first adjust this a bit. Okay, so this is a big part. I'm not sure whether I'll be able to do justice in this whole part in one or today's video. So I'm going to make 1 hour's video at tops because I don't want to bore you to death. Also my throat is not very well, so I'm not going to kill myself speaking for more than 1 hour. I'm just going to target 1 hour of this video and give you as much information as I can give you. Maybe let's do all the theorems at first. Let's target to do all the theorems. Okay, so what do we have to prove? So we have to prove, hey, I've already written over here. To prove angle POQ is 2 times angle PRQ. What is given? Given is arc PQ subtends angle POQ at the center and arc PQ subtends angle PRQ at any point on the remaining part of the circle to prove that POQ is double angle PRQ. Great. So there is one construction. What is the construction? Now remember, this proof can be asked in the examination. This is a very important proof and it can be asked. So be careful about that. Okay. Okay. So the construction is join OR and extend up to M. No need to join PQ. There is no need that you should join PQ. Is there any need? I don't think there is any need. You can join. Okay, let's write also join PQ. It's not necessary, but still write also join PQ. Okay. So what we have done, we have joined O to R and extended it up to M. Great. That's the construction. Now proof. Okay, so what is the proof? In triangle OPR, in triangle OPR, OR is equal to OP. Why? Radii of the same circle. All radii of the same circle are equal.
So OR is equal to OP. You can look here also, OR is equal to OP. Here also, OR is equal to OP. You see that? It is applicable in any of the three diagrams. The proof. You don't have to write three proofs. OR is equal to OP. Okay? So, we can say that angle 1 is equal to angle 2. Which is angle 1? Over here, this angle is equal to angle 2. Why is angle 1 equal to angle 2? Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. So, angle 1 is equal to angle 2. OR is equal to OP. Right? Okay. What next? Angle POM is equal to angle OPR, angle OPR plus angle ORP. Angle POM. Do you see angle POM? It is over here. In triangle OPR, I am talking about triangle OPR. Angle POM is equal to angle OPR plus angle ORP. Why is that? Angle POM is angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2. Why is angle 3 equal to angle 1 plus angle 2? Exterior angle property. Exterior angle property. In a triangle, exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2. Okay, so this is equation number 1. Give this equation number 1. Okay, next. In triangle OQR, in triangle OQR, OQ is equal to OR, radii of a circle, right? OQ is equal to OR. I'm sorry about that. That's not. Yeah, this is OQ, which is equal to OR, right? OQ is equal to OR. Here the numbers are given wrong, I think. There is something wrong with the numbers over here. 6, 7, there are no angles at 6 and 7. Yeah, there can be angle 5 and 6. See, angle 6 is not written over here. So let me write over here, this is angle 6. Let me write over here, this is angle 6. This 7, this is not 6 and 7. This is, now if we consider this angle, yeah, this is angle 6. Correct? So in triangle OQR, OQ is equal to OR if you can visualize. Right? So can we say that angle 5 is equal to angle 6? Why is angle 5 equal to angle 6? Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. Right? So angle 5 is equal to angle 6. OQ is equal to OR, so angle 5 is equal to angle 6. Now can we say that angle QOM is equal to angle OQR plus angle ORQ. OQR plus ORQ. Or angle QOM is nothing but angle 4, which is equal to angle 5 plus angle 6. What is the reason? Exterior angle property. If you see closely in triangle OQR, 5 and 6 are opposite interior angles. Their sum must be equal to angle 4, which is the exterior angle. Right? So angle 4 is equal to angle 5 plus angle 6, exterior angle property. This is equation number 2.
This is equation number 2. Okay, so we have OPR, OQR in our hands. Great. What next? Now see, we have already mentioned equation number 1 and 2. Now what we'll do is adding equation 1 and 2. What do we get? Angle 3 plus angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6. You see that? So what we have done, angle 3 plus 4 is equal to 1 plus 2 plus 5 plus 6. In any of the figure this is true. 3 plus 4 is 1 plus 2 plus 5 plus 6. 3 plus 4 is 1 plus 2 plus 5 plus 6. But there is one very important thing you should know, that angle 1 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 6. So in place of angle 1 and angle 2, can I write 2 times angle 2? And in place of angle 5 and angle 6, can I write 2 times angle 5? Yes, I can. You know why? Because I want these two angles together. Okay, so why am I doing? See, these two are equal and these two are equal. Okay, so what I'm going to write, see, angle 3, therefore angle 3 plus angle 4 is 2 times angle 2 plus 2 times angle 5. That is angle 3 plus angle 4 is equal to 2 times angle 2 plus angle 5. And this gives us our final result. You know what is angle 3 plus angle 4? Angle 3 plus angle 4 is angle POQ. In any of the case, angle POQ. So angle POQ is equal to 2 times angle. What is angle 2 plus angle 5? It is PRQ. Any of the case. PRQ. So angle POQ is 2 times angle PRQ. Angle POQ is 2 times angle PRQ. That's what we have proved. So we have simply, no congruency, nothing is required. Simply we have proved by isosceles triangle property, angles opposite to equal sides are equal, and we have used the property of exterior angle, and we have created two equations, added them, and we have proved this theorem. So the theorem, again I would like to say the theorem for all of you. It says that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. Now many of you must be wondering कि इसको apply कैसे करते हैं. ठीक है, so I'll show you that as well. इसको apply कैसे करना है. Okay, so if this angle, let's say, is 60 degree, ठीक है, I will take these 2 points and I will make an angle on the remaining part of the circle. Now this arc is making an angle at the center of the circle. Let me make an angle over here. Let this point be R. I'm just going to connect this point here and this point over here. Okay, so this angle will be how much? It will be 30 degree. Also, if I take one angle over here, can you tell me this angle will be how much? 30 degree. Let's say this is S. If I take a point over here, how much will this angle be? This will also be 30 degree. So angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. Any remaining part of the circle you make an angle, they all will be equal to half the angle subtended by the same arc at the remaining part. At the center, I'm sorry. So this is how you apply this theorem. Okay, we will see many questions based on this theorem ahead
in this chapter. Okay, let's go to the next theorem, theorem number 9 for class 10th ICSE. This will be the second theorem. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Okay, so this is the figure for you. It's given that a circle with center O and there is an arc AMB. Do you see arc AMB? Arc AMB is subtending angles 2 and angle 3 at the circle, at the remaining part of the circle. So at point C, angle ACB is subtended by arc AMB, and at point D, angle ADB is subtended. We have to prove that these two angles 2 and 3 are equal. For this, we have to do a construction. We have to join points A and B with the center of the circle, that is AO and BO. Alright, great. Now what? Now the next thing, we have to do is proof. Okay, so what do we write? See, after the construction, it becomes very clear that angle AOB is equal to 2 times angle ADB, and angle AOB is equal to 2 times angle ACB. Can you give me the reason? The reason is the previous theorem. Angle subtended, you have to write the whole thing, okay? Subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at remaining part of the circle. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at remaining part of the circle. That's the full theorem. You have to write the full theorem. Okay, इसका मतलब है AOB 2 times ADB है और AOB 2 times ACB भी है. ठीक है, इसका क्या मतलब है? Therefore we can say that 2 times ADB is equal to 2 times angle ACB. Therefore angle ADB is equal to angle ACB. Angle ADB is equal to angle ACB. So it is proved that angles in the same segment are equal. This is a very important proof. And we have seen this. I've just showed you an example. I just showed you an example over here. Let me just show you again. Over here, you see that all the angles subtended in the same segment are equal to each other. All are equal to 30 degrees because all their end points are P and Q. So they are all said to be in the segment PQ. Likewise, if you see in our current figure, you see you just have to figure out what are the end points. End point अगर same है दोनों angles के ADB, ACB, मतलब end points देखने हैं सिर्फ हमको. अगर end points same है मतलब वो same segment में है, मतलब वो equal होंगे. So angle ADB is equal to angle ACB. Angles in the same segment of a circle are equal. That is the next theorem. Theorem number 9. Theorem number 2 for class 10th ICSE students. Let's go to the next theorem. Theorem number 10. The angle in a semicircle is a right angle. उसका ये figure है. हमें क्या प्रूव करना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. और बहुत इजी है, ये बहुत इजी है. ठीक है, सी
गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? इन अ सर्कल with center O, in a circle with center O, in a circle with center O, AB is a diameter. Okay, AB is a diameter. To prove that angle ACB is 90 degree. Okay, angle ACB is 90 degree. Any construction is required? Construction? No, I don't think any construction is required. I'm sorry for that. Okay, proof. It's very easy. Angle AOB is equal to 180 degree. Why is it 180? Angle on a straight line. Angle on a straight line is 180, right? Also, angle AOB is 2 times angle ACB. What is the reason? You have to write the whole theorem. Which theorem? Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. The whole theorem you have to write, okay? I'm not writing, but you must write. So I hope that you're writing this proof with the video. You must. Okay, so angle AOB is 2 times angle ACB. So 180 degree is equal to 2 times angle ACB. So therefore angle ACB is 180 degree by 2, which is 90 degree. Angle ACB is nothing but 90 degree. You see that? So we have proved that angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. Right? Cool. Okay. This corollary is, I'm sure it's not part of your syllabus. Let me just check once. Okay, so there were a couple of theorems which were not part of your syllabus, so I just skipped them. Right? Now let's move ahead with some examples. So this is a good chance that we can understand what kind of questions will be asked based on this particular part of the chapter. Okay, if O is the center of the circle, find the value of x in the following figures. Okay, this is very interesting. Okay, we have to find x. Okay, let's look at the first figure. So here we have 80 degrees, we have x, we have here 40 degrees. Okay, so we can find it easily. So this is the first one. Okay, so can I say that angle BAC in the first figure, please note that angle BAC is equal to angle BDC. Can you tell me the reason why angle BAC is equal to angle BDC? Why these two angles are equal? Because they are angles in the same segment. Angles in the same segment. Angles in the same segment. So therefore angle BAC is equal to angle BDC is equal to 40 degree. Angle BAC is equal to angle BDC is equal to 40 degree. Okay. Now in triangle BDC, focus on triangle BDC please. Angle BDC plus angle DBC plus angle DCB is equal to 180 degree. Angle sum property. Okay, so angle BDC, which I just found to be 40 degree, plus angle DBC, which is 80 degree, plus angle DCB, which is x, their sum comes out to be 180 degree. So 120 plus x is equal to 180 degree.
So x is equal to 180 minus 120. So x is equal to 60 degree. That's the value of x in the first figure. Great. What about the second figure? Okay, so this is also very easy. So see, here in the first figure I have written the whole thing. This is just like the questions from lines and angles. मतलब इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है तुमको. You just have to show the method of how you found that particular thing. कुछ तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बट कैसे लिखना है ये मैंने तुम्हें समझाया. एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल या ऐसे कोई थियरम का यूज़ करके तुम्हें लिखना है. तो ये मैं तुम्हें ओरली बताऊंगा, लिखना तुमको है, ठीक है. तो पहले समझ लो क्या करना है. हमें एक्स ढूंढना है, ठीक है. तो सबसे पहले समझ लो कि अगर ये x है तो ये भी x होगा ना. y एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PAB, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अच्छा, दूसरी एक बात, इन ट्राइंगल APB पहले तो लिख दिया तुमने एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PAB. सो एंगल PAB इज x, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. फिर लिखो इन ट्राइंगल PAB, कंसिडर ट्राइंगल PAB, एंगल APB इज 90 डिग्री. Why is this angle 90 degree? Angle in a semicircle is always a right angle. याद है हमने थियरम की थी अभी. सो ये डायमीटर है AB. तो PAB क्या हुआ, सॉरी APB क्या हुआ, एंगल इन अ सेमीसर्कल. तो हमें पता है ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. तो वी कैन ईजिली फाइंड x. x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 40. That is 180 minus 130. So x will be equal to 50 degree. तो यहाँ पे x कितना आया था 60, यहाँ पे x कितना आया 50. इसका मेथड और स्टेप्स तुम्हें लिखना है, मैंने तुम्हें सिर्फ हिंट दी है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू दैट नाउ. ओके, सो यू आर डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ भी हमें x ढूंढना है. चलो कैसे करेंगे. x ये पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और हमें x ढूंढना है. तो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड दिस एंगल. दैट्स वेरी इजी. हाउ विल वी फाइंड दिस एंगल? दैट विल बी 360 माइनस 120 प्लस 90. सो 360 minus 210, that is 150 डिग्री. 150 कितना है ये 150. तो x कितना होगा, x कितना होगा, x will be half of 150. x will be half of 150. half of 150 कितना होता है, half of 150 is 75. So x will be 75 degrees. x will be 75 degrees. ठीक है. So x की वैल्यू क्या होगी 75. क्यों होगी 75? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 150 डिग्री. तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना सबटेंड करेगा, हाफ ऑफ 150. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. मतलब ये x होगा 75. ठीक है. सो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया कंप्लीट एंगल का, और ये एंगल BOC ढूंढा, और फिर हमने थियरम नंबर 8 जो था, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वाला थियरम यूज़ करके x ढूंढा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. इसमें भी हमें x ढूंढना है, दोनों में. ग्रेट. यहां पे आई बिलीव दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. अच्छा,
देखो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों इक्वल होने चाहिए। ए बी डी कितना है एक्स, और ए सी डी भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा। अच्छा, एंगल सी ए बी और एंगल सी डी बी भी इक्वल होने चाहिए। सी ए बी और सी डी बी ये दोनों कितना होना चाहिए 50। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है, मीन्स एक कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ कुछ बताया नहीं है ये लोगों ने। सो शैल वी टेक दिस इक्वल दीज टू एंगल्स, बट इससे क्या होगा? ओके तो ये एक अभी तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन के लिए डाउट है। एनीवेज लेट्स लुक एट दिस एंगल। ओह दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे ये 120 है, तो हाउ मच विल बी दिस एंगल? 360 माइनस 120 दैट इज 240 डिग्री। अगर ये 240 है तो हाउ मच विल बी x? x विल बी हाफ ऑफ 240 विच इज़ 120। तो यहाँ पे x कितना होगा 120 डिग्री। कौन सा थियरम यूज़ किया मैंने? पहले तो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मतलब कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है 360। सो अगर ये 120 है तो ये 240, एंड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थियरम यूज करके x निकाला 120। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डाउट है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4 किया कैसे उन्होंने। ओ डी बी इज इक्वल टू ओ ए सी 50 डिग्री। ओ डी बी इज इक्वल टू ओ ए सी 50 डिग्री, हाँ वो तो मैंने बताया था पहले ही। और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओह माय गॉड, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रेडियाई ऑफ द सर्कल हमने देखा ही नहीं, मतलब ओ बी और ओ डी इक्वल है ना, ये तो सेंटर है, तो ये तो रेडियाई हो गई। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ने अगर नहीं लिखा है ये सब तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लो कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करो। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन द थियरम्स विच आर डिस्कस्ड टिल नाउ, इसको प्लीज़ आप लोग लिख लो अभी वीडियो पॉज करके। ओके ग्रेट, सो दिस इज डन। लेट्स सी हमारे सारे आंसर सही है कि नहीं। सो पहले का आंसर था 60 आया था, यस। उसके बाद वाले का आंसर था 50, सेकंड का, वो भी करेक्ट है। थर्ड का आंसर था 75, यस। फोर्थ का आंसर है 50 और फिफ्थ का 120। फोर्थ का है 50 और फिफ्थ का 120, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इन द फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एंगल पी ओ आर ढूंढना है हमें यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड एंगल पी ओ आर। सी दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ओ विथ क्यू। क्यू को ओ के साथ ज्वाइन करो। अच्छा, अब ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ पी एंड ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ आर। मतलब ये तीनों इक्वल है, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। वाई? वाई 30 डिग्री? 30 डिग्री बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, सो ये 30, ये भी 30, ये 40, ये भी 40। ठीक है, अब क्या करना है? मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर ढूंढना है हमें। पी ओ आर मतलब कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, पी ओ आर। नाउ एंगल पी ओ आर is 2 times angle PQR. Why?
What is the reason? वही theorem. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. So angle POR is equal to 2 times angle, कितना है ये? 30 plus 40, 70. That is 140 degree. So angle POR कितना है? 140 degree. Angle POR कितना है? 140 degree. ठीक है? So that's how we found angle POR. अच्छा. In the figure, O is the center of the circle and measure of arc ABC is 100. Measure of arc ABC is 100. अच्छा, measure of arc ABC का मतलब क्या होता है? Arc ABC का measure 100 है, इसका मतलब क्या है? Measure of arc ABC is 100. ये क्लियर नहीं है. लेट्स चेक इट आउट. ये क्या है? यहाँ तो आर्क के बारे में कुछ दिया ही नहीं है 100 डिग्रीज के बारे में यार. मतलब दिस इज रियली एम्बिगुअस. मतलब मुझे बहुत डाउट आया ये देख के ही कि ये क्या है. अच्छा, फाइंड एंगल ADC एंड एंगल ABC. ADC एंड ABC. एक्चुअली इसका मैं यूज़ ही नहीं करूँगा ABC और ADC ढूंढने के लिए. उसके बिना ही मैं इसको ढूंढूंगा. देखते हैं कैसे करना है. लेट्स सी. देखो, एंगल AOC is 2 times angle ADC. What is the reason? Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. AOC कितना है? 120 degree is 2 times angle ADC. So angle, therefore angle ADC is 120 by 2, which is 60 degree. Angle ADC is 60 degree. What about angle ABC? ABC. Acha. Now you can say, you can find reflex angle AOC. Reflex angle AOC कितना है? 360 degree minus angle AOC. Angle AOC कितना है? 120 degree. 360 minus 120, 240. ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना है? 240. ठीक है. अब देखो, रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC. रीजन क्या है? रीजन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सेम थियरम जो ऊपर था वही थियरम हमें यहां भी लिखना है. सो रिफ्लेक्स एंगल AOC तो मिल गया. कितना है? 240 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC. सो एंगल ABC इज इक्वल टू 240 बाई 2 विच इज 120 डिग्री. एंगल ABC कितना आएगा? 120 डिग्री. और एंगल ADC कितना है? 60 डिग्री. ठीक है. सो वी गॉट एंगल ABC एंड एंगल ADC. सो इसमें वो 100 डिग्री का कोई यूज ही नहीं था. मेजर ऑफ आर्क ABC इज 100 डिग्री वो लोग ने बोल दिया है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. और मुझे तो लग रहा है कि कौन से एंगल ABC, कौन सी मेजर ऑफ आर्क ABC 100 डिग्री है. मुझे कुछ तो गलत लगा इसमें. मुझे लग रहा है ये 120 डिग्री बोल रहे हैं लोग. मेजर ऑफ आर्क ABC इट्स द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC एट द सेंटर. 100 नहीं, 120 होना चाहिए. ठीक है. प्लीज़ इसको पॉज करो और लिख लो. वीडियो पॉज करके लिख लो, इसको नोट कर लो.
Okay, let's go to the next question once you are done. सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, हमें कुछ तो प्रूव करना है या तो कुछ फाइंड करना है, मोस्टली फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है. सो इफ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा ये पार्ट. Okay, in the given figure, O is the center of the circle. Angle subtended by arc BCD at the center. Arc BCD 150 डिग्री कर रहा है सेंटर पे subtend. एक मिनट. The angle subtended by arc BC at the center is 150 degree. सही है. BC is produced to E. ठीक है. Find angle BAD and BCD. BCD. BAD BCD. ओके, लेट्स सी. हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बहुत इजीली. देखो, एंगल BCD इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, एंगल BOD इज इक्वल टू 2 times angle BAD. Angle BOD is 2 times angle BAD. So angle BOD कितना है? 150 degree is equal to twice angle BAD. So 150 by 2 is equal to angle BAD. 150 by 2 is 75 degree which is equal to angle BAD. अच्छा, ये क्यों है ऐसा? रीज़न क्या होगा इसका? वही सेम थियरम नंबर जो फर्स्ट थियरम हमने की थी. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. आर्क BCD सेंटर पे 150 डिग्री कर रही है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 150 का हाफ, मतलब 75. वही तो हमने लिखा है यहाँ पे. सो BAD मिल गया. अब BCD ढूंढना है. नाउ बहुत ईजी है. रिफ्लेक्स, यहाँ पे पता नहीं इसको एक्सटेंड क्यों किया है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ओके, रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल BOD. दैट इज 360 माइनस BOD कितना है? 150. 360 माइनस 150 कितना है? 210 डिग्रीज. 210 कौन सा एंगल है? ये वाला 210. Okay, so angle BCD is equal to half of reflex angle BOD. That is half of reflex angle BOD कितना है? 210, which is 105. मतलब एंगल BCD कितना हो जाएगा? 105. BAD एंड BCD फॉर यू. ठीक है, समझ में आया? प्लीज लिख लो इसको. सो बहुत इजी है क्वेश्चंस. तुम्हें थ्योरम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो ही उसके एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे. राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, 2 पार्ट में करेंगे इसको. इन फिगर AB is diameter of the circle with center O and radius OD is perpendicular to AB. ठीक है. If C is any point on the arc DB, find angle BAD and angle ACD. ओके, तो AB डायमीटर है, OD परपेंडिकुलर है AB से. गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे. AB is a diameter, DO is perpendicular to AB. To find angle BAD and angle ACD. BAD
बी ए डी ये वाला एंगल है, हमें ये ढूंढना है, एंड एंगल ए सी डी जो ये वाला एंगल है। ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ ए is equal to OD, radii of a circle. So angle OAD is equal to angle ODA. OAD और ODA ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों को हम x मान लेते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। सो एंगल OAD और एंगल ODA दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ऑल्सो एंगल OAD प्लस एंगल ODA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। OAD कितना है x, ODA x प्लस AOD कितना है 90। AOD 90 क्यों है? क्योंकि DO इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 2x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 45, x 45 हो गया। ठीक है, x 45 हो गया, याद रखना x 45 हो गया है। See, now it's going to be really easy, very easy. अगर तुम देखो सिमिलरली, अच्छा x 45 है ना, तो इससे एक चीज तो खत्म हो गई अपनी, एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल BAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OD। सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, OB और OD क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होंगे और ये भी 45 डिग्री होगा अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो। ठीक है, अच्छा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD is equal to angle ACD. You know why? Angles in the same segment, angles in the same segment, angle ABD is equal to angle ACD, angles in the same segment. If you see, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, ABD और ACD दोनों के एंड पॉइंट A और D है। सो देयरफॉर एंगल ACD जो हमें ढूंढना है इज इक्वल टू एंगल ABD, और ABD तो जस्ट ढूंढा है हमने। ABD कितना है, देखो ये जो OBD है ना वही ABD है, OBD ढूंढा ना हमने 45 डिग्री। सो ACD कितना हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। ये हमने ढूंढा 45 डिग्री, सो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ACD दैट ऑल्सो वी फाउंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सो देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। Let's see how many, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ अराउंड 10 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो अच्छे से समझ लो। मैं भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि आपको ये थ्योरम्स लिखनी है, समझनी है,
और फिर जितने भी अभी सॉल्व एग्जाम्पल्स किए वो भी एक बार लिख लेना है, ठीक है। फिर बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।